हेलो एंड वेलकम, मैं हूं खुर्रम। न्यूजीलैंड हैव डन द अनथिंकेबल। जी हाँ, 11 साल के बाद इंडिया अगर अपने घर पे किसी से टेस्ट सीरीज़ हारी है तो वो न्यूजीलैंड से हारी है। बड़ी बड़ी टीम्स आई अंडर द कैप्टनसी ऑफ स्टीवन स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया टूर्ड, दे फेल टू बीट इंडिया एट होम in their backyard. England came with Joe Root at the helm. They failed to defeat India in their backyard in a test series. But Tom Latham's New Zealand have done this, and without the presence of the talismanic batsman, their most experienced batsman, Kane Williamson. ये बहुत बड़ी जीत है न्यूजीलैंड के लिए। इसकी इनॉर्बिटी आप जान सकते हैं कि इंडिया ने 52 टेस्ट मैचेस खेले थे इस सीरीज से पहले। 11 साल में, पिछले 11 साल में, जब when they lost to England in 2012-2013, they lost to Alistair Cook's England. After that, they have played, prior to this series, 52 test matches. Out of that, they won 41 test matches. They drew 7 of them. They lost only 4 tests, and those 4 losses came against Australia and England. Twice to Australia, twice to England. और वो चारों मैचेस अक्रॉस 4 डिफरेंट सीरीज़ थे। जी हाँ, किसी भी सीरीज़ में इंडिया ने एक टेस्ट मैच से ज़्यादा नहीं हारा था 11 साल में, और ये पहली बार हुआ है कि इंडिया ने पिछले 11 साल के अंदर एक सीरीज़ में 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल। And New Zealand have toured India 13 times. This is the 13th time they're touring. Over the past 12 series, they had played 36 test matches. They won only 2 out of those 36 test matches. 17 of them were drawn, 17 were won by India. 1969 में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी इंडियन सॉइल के ऊपर, और उसके बाद मेरे ख्याल से 2003 में उन्होंने दूसरी जीत दर्ज की थी। Graham Dowling and Stephen Fleming were the 2 successful captains in those 2 test matches. Tom Latham has gone a step ahead and etched his name in history books by becoming the first New Zealand captain to breach the Indian frontier. न्यूजीलैंड की ये जीत बड़ी इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने 2 डिफरेंट सर्फेसेस पे इंडिया को हराया। बेंगलोर में थोड़ा सी सीमिंग कंडीशंस थी शुरू में, फिर उसके बाद बैटिंग सर्फेस हो गई, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया। 46 पे ऑल आउट किया इंडिया को, और उसके बाद इंडिया हैड टू शेज न्यूजीलैंड थ्रू आउट द टेस्ट मैच एंड दे कुडंट इवेंचुअली टू लूज द टेस्ट मैच। और दूसरे टेस्ट के अंदर पुणे के अंदर स्लो टर्नर थी, जहाँ मिचेल सैंटनर ने 13 विकेट लेकर इंडियन प्लेयर्स को, ट्रेडिशनली वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, उनको सरप्राइज़ किया। टॉम लेथम को इस बात की दाद देना होगी क्योंकि उन्होंने मिचेल सैंटनर को टेस्ट मैचेस में खिलाया। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग कमेंटेटर इयन स्मिथ हिमसेल्फ, फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर एंड नाउ कमेंटेटर इयन स्मिथ, वाज अगेंस्ट सैंटनर प्लेइंग test match cricket because he was compartmentalized as a white ball cricketer. But Tom Latham and the team management, which includes coach Gary Stead, they decided to play Santner in this test match, and look what he did. He picked 13 wickets to rattle the Indians. इससे सवाल ये उठता है कि are Indian batsmen vulnerable against spin? जी हाँ, देखकर तो यही लगता है कि जिस तरीके से मिचेल सैंटनर को वो खेल रहे थे, तो उसे लग रहा था कि उनके पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है against a spinner who bowls tight lines and length and who can occasionally turn the ball. He's in the one-day mold, so he knows how to bowl restrictive length, and Indian batsmen were really struggling to get him away. Indian batsmen struggling against touring spinners is nothing new. Last year भी January 2023 में England India आई थी, और Tom Hartley, another left-arm spinner, picked 13 wickets against India, and India lost that first test match. However, India came back to win the next 4 matches. फिर February March के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई. They laid a turning track. They laid a spin-friendly wicket in Indore, but it were Indian batsmen who struggled, and Australia won the test match. Experts की अगर हम बात करें तो they blame a few things. One of them is the throw downs. जी हाँ, एक जो साइड आर्म होता है आजकल, जिससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है. Batsmen generally spend a lot of time facing throw downs from the side arm. और इरफान पठान ने तो इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि there's too much of throw downs in cricket nowadays, which
impacts their ability to play spin bowling, which impacts the batsman's ability to play spin bowling. इसके बारे में मैंने वेंकटपति राजू से बात की थी, जी हाँ, फॉर्मर इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर जो 90s के अंदर who used to form a very potent combination with Anil Kumble. Raju ji agreed with this theory that sidearm or the throwdowns are impacting Indian batsmen's ability to play spin, but he also blamed lack of domestic cricket. You know, जो टॉप क्रिकेटर्स इंडिया में हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, दे हार्डली प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट. और डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ अ प्लेस वेयर यू होन सच स्किल्स. उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी अब वाली विकेट्स वाली पिचेस नहीं बन रही जो बैट्समैन की एबिलिटी अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलिंग टेस्ट करती थी, स्पेशली स्पिन बॉलिंग. आजकल मोस्टली या तो सीम फ्रेंडली विकेट्स होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनका कहना यह है, या फिर बिल्कुल ही फ्लैट विकेट्स होती हैं जिसमें रन बनाना बहुत आसान होता है, जिसके अंदर आपकी स्किल्स नहीं बन पाती. उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि क्यूरेटर्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर विकेट्स. जनरली होता क्या है कि 4 डे या 5 डे गेम्स के अंदर द पिच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ फैशन वेयर इट हेल्प्स certain aspect in a certain phase. In the first day, the first morning, it will help the seamers and it will slightly tilt towards the batsman. And from the third day or the third day onwards, late on third day, it will start helping the spin bowlers. ये एक ट्रेडिशनल तरीका होता था पिचेस का, लेकिन वो आजकल होता नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बिकॉज देयर आर फार टू मैनी मैचेस. देयर आर रणजी ट्रॉफी मैचेस ही 8-8, 9-9 खेले जा रहे हैं हर सीज़न, जो पहले नहीं हुआ करते थे. और फिर एज ग्रुप क्रिकेट होता है, विमेंस क्रिकेट होता है, एंड देयर आर सो मेनी T20 लीग्स, T20 मैचेस दैट आर बीइंग प्लेड, due to which the emphasis is on preparing flat wickets. So to prepare a wicket or a pitch for 4 days or 5 days requires a different skill set, it requires time, and that time is not available to the curators according to Raj. हालांकि सरफराज खान भी डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और ही इज़ बीन स्कोरिंग टन्स ऑफ रन्स. Even then he struggled against Mitchell Santner and co in the second test. लेकिन जिस तरीके से उनको यूज़ किया गया है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग शिफ्ट की गई है, वो इट्स वेरी सरप्राइजिंग. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि गौतम गंभीर के जो लेड टीम मैनेजमेंट है, नाउ ही इज़ द कोच, गौतम हैज़ बीन द कोच फॉर दिस सीरीज़ फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड जो जिस तरीके से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी रही है, इट इज़ मोर अट्यून्ड टू वाइड बॉल क्रिकेट. अगर आप देखें, उन्होंने सरफराज को नंबर 4 के ऊपर खिलाया पहले टेस्ट के अंदर. ही स्कोर्ड 150 इन द सेकेंड इनिंग्स, एंड इन द नेक्स्ट टेस्ट द सक्सेसफुल बैट्समैन वॉज शिफ्टेड टू नंबर 6 इन द बैटिंग लाइनअप बिलो ऋषभ पंत. फिर इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ दैट सेकेंड टेस्ट, यानी मैं पुणे टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ही वॉज शिफ्टेड फ्रॉम 6th to 7th बिलो वॉशिंगटन सुंदर ऑल्सो. ये क्यों डिसीजन लिया गया? मेरा अंदाज़ा ये है कि ये डिसीजन शायद इसलिए लिया गया था कि दे प्रोबेबली थॉट अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लाइक पंत और वॉशिंगटन सुंदर will be able to derail Santner, a left arm spinner like Santner, because he was bowling very tight lines. But this is a strategy which can be effective in white ball cricket, where you're trying to score runs quickly, where white ball cricket का पूरा process अलग होता है. To apply that here and not trust your successful batsman, most successful batsman from first test, I thought it was a very confidence shattering move. If he is not good enough to play a left arm spinner at test level, might not as well play him in test team at all. But to take a strategy to demote him to number 6 and 7, I thought that was a very poor strategy, and I think that might have played a role in Indian batting's failure. Both the teams now move on to Mumbai. It will be a red soil pitch. जी हाँ, रेड सॉइल पिच की ख़ास बात होती है. मैं एक पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि रेड सॉइल पिच थोड़ा ब्रेक जल्दी करती है, थोड़ा शार्प टर्न सपोर्ट करती है. और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ सुबह और शाम थोड़ी ब्रीज चलती है, सीम बॉलर्स को भी हेल्प करती है. न्यूजीलैंड विल ऑल्सो फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प देयर, बिकॉज उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट भी अच्छी परचेज कर सकते हैं. Indian team management will have to think who they play. There are talks that Jasprit Bumrah might be rested, but we'll see how it pans out over the next couple of days. Until next time, bye-bye.